The wedding ceremony is the most important ceremony in an Indian's life. It takes 4 days straight, including 3 nights. After the long wedding ceremony, the morning of the day to go to the husband's family's house has arrived. Pouring tears out that she was holding in. Saying goodbye to her mum was something she thought would never happen. Now Rakhi leaves home, just like other Indian women, to walk into her husband's place. Her husband's place is in a farm village that is 100 kilometers away from her own home. And her husband went on to another place that is 400 kilometers away from here to get a job. अपने पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, फिर सुबह 7 बजे नाश्ता बनाया, सबको दिया। बर्तन भी हैं, झाड़ू भी है, पोंछा भी है, कपड़े भी धुलने हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। दिन में 4-5 बार करते हैं, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है जो दिवाली पे जाओ, अपनी यहाँ ससुराल में ही करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। 22 फरवरी को बाबू हुआ था और बहुत दर्द से गुजर रहे थे, इसलिए मैंने माँ को याद किया, क्योंकि माँ ने मुझे जन्म दिया था। दर्द गुजर, हाँ, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत बेकार भी लगता है, लेकिन क्या करें, यहीं बिताना पड़ेगा। This was the moment that Rakhi's facial expressions started to change. हेलो, हाँ, राखी कैसी हो? अच्छे हैं, तुम कैसी हो? वो देखो हाँ, नानी नानी देखो। नहीं, रोने नहीं है। कुछ नहीं कर रहे, आप बताओ। अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही हो। अभी तक तो कॉल से ही बात करते थे, लेकिन अब जो वीडियो कॉल से बात करेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा, माँ को देख पाएंगे। Now Rakhi can not only look at her mum's face while making video calls, but also listen to music, study and shop. Rakhi is staying in a little town in India, but she is communicating with people around the world. Of the 1.3 billion people living in India, more than 90%, 1.17 billion people, have been able to experience 4G LTE service. Technology enriches our lives.